बैक टू माय चैनल यू ब्यूटीफुल पीपल। आज मैं एक नया सेगमेंट करने वाली हूँ जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगी, क्योंकि कभी ख्याल ही नहीं आया। बट अचानक से मुझे एक मौका मिला कि आज मुझे जाना है कहीं बाहर किसी पार्टी में, और मेकअप तो मुझे करना ही था हल्का फुल्का जैसे मैं करती हूँ। बट आज मैंने सोचा कुछ नया किया जाए कि आज मैं नहीं अपना मेकअप करूँगी, आज मेरी मेकअप करेगी मेरी बेटी। हाँ, जब बेटियाँ बड़ी हो जाती है ना तो इन चीज़ों का बड़ा मज़ा आता है। बिटवीन द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड डॉटर गेट्स स्ट्रॉन्गर। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई दिस सेगमेंट कि वो मेरा मेकअप कैसे करती है, बिकॉज आजकल उसको भी नया नया जो शौक चढ़ा है 1 साल से मेकअप टूल्स और मेकअप ट्राई करने के लिए। सो आई थॉट अगर ट्राई करना है तो मुझे ही मॉडल बना के ट्राई कर ले। तो आज मेरा मेकअप करेगी मेरी बेटी। हाय आन्या। सो ये एक्सपेरिमेंट देखते कितना सक्सेसफुल होता है। आई हैव ऑल द प्रोडक्ट्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी इज़ गोइंग टू डू माई मेकअप। अभी मैंने फेस पे कुछ नहीं लगाया, एकदम फ्रेश में धोकर आई हूँ एंड आई हैव जस्ट यूज्ड अ फेस सिरम, दैट्स इट। So let's start. So here we begin and she plans to start with a loose powder. Yes, people, you must be thinking that loose powder तो बाद में foundation या base के बाद लगाया जाता है. But because I have oily skin, so she prefers to use loose powder on me first all over my face and then use a slight base and then the powder again. So let's get started. You can get your pan, no? Wait. Let me know if you want my eyes open. Okay, I want very, very light makeup, Anya. Okay. You show them how you're dusting it also, in the sense the brush. The nose? No. Okay, she's not covered the nose. I don't know why. Why? Itchy होता है. Can you please blend this? I don't like the white layer that I have. There is I mean, no like, white just blend it in. Next, she's applying the Lakme foundation on me. I use one shade darker than my skin tone. Because एकदम मैचिंग स्किन टोन वो बहुत ही वाइट लेयर छोड़ देता है. इट्स लाइक बिकम्स वाइटर ऑन वाइटर ऑन वाइटर लेयर. सो आई टेंड टू चूज माई फाउंडेशन बेस एज वन टोन डार्कर. वेरी लिटिल. ये मेकअप के वक्त कितने ऑड फेसेस हम लोग बनाते हैं ना, कभी ऐसे ऐसे. इट्स सो फनी टू सी योरसेल्फ लाइक दैट. फोरहेड. सब करेगा. Can you show them the blender, the shape of the blender, please? Numbers like this. This is the shape of the blender. It has an edge to both the sides, so that a pointed edge that can go into the corners. The thing is, I'll just tell you. The skill of using the blender is that we should not wipe it on the face while applying, like a layer. We should tap it in so that it remains there but blends into the skin. Correct, Tanya? Am I right? I don't want so many layers though. Can we avoid one layer? थोड़ा सा लो. No. She's not listening. She's now going to use the concealer on me. This is the concealer. Where are you using the concealer? As in, why do we use it here? Tell them. Under eye for eye bags and this for lifting up the face.
concealer on the eye bags under the eye and to lift the Face up. Give it a Face lifting up. effect. okay, so basically you're using it more like a highlighter, are you? I mean No, a not shape like- contour, like a contour rather than a thing. Not highlighter but like a contour I meant. Close your eyes. Oh, Do maybe bottom. you want to highlight? bottom. Wait. Oh boy, what are you highlighting it with? Highlighter and. We had a highlighter. No, which this we is want to not the use. highlighting highlight. I mean. Not much यार, इतना मेकअप मत करो baby. अरे अभी तो आई न्यूट्रल लिप डाउन You will neutral it down. How? So tell me something. I wanted to use a lip balm in between because फिर वो ना absorb नहीं होगा जब. Can you get me my lip balm or any of yours also? The next is the contouring where she's going to contour my cheekbones and my jawline. It's a contour stick that is easy to use. It's a pop-up. So she's contouring or lining my jawline and my cheek line. And that is going to be blended again. Is it? मेरा नोज भी तो करना है. ज़्यादा नहीं, nose में. बस हो. Your hand is covering what they want to see. So whatever you do on one side of the face has to be done on the other side. Of course, it goes without saying, but one should have a steady hand to do it. If you all are wondering and asking how does she know so much at her age, I mean like I'm looking like a bunny right now with coloring my nose. So if you're wondering how she knows so much, and it's like the youth of today is like really updated and they follow a lot of what should I say, the internet, and they keep themselves updated on everything. Unlike us. So I know define that. पता नहीं मैं क्या You want a लगूंगी. blush अच्छे से? No. Can I use quantity? I want No, very no, no. little. अरे ऐसे नहीं होता right? Is that a blush? Yeah. You said you don't have any? सब निकल आता है इस लड़की के पास, सब निकल आता है. जहाँ बोलो है नहीं है. जब करने जाओ तो सब है. पूरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा इससे तो. Meaning? ऑक्सीडाइज हो जाएगा मतलब रिड्यूस इन क्वांटिटी से. On my cheekbone. अरे रुको ना. ऑम्ब्रे इफेक्ट होता है. Can I come? So you want to apply it on the cheekbone? I will, but a different shade. Oh बाबा, इतना मत करो आन्या. Please listen to me. My God, it's too much. Mama, can you relax थोड़ा सा? My friends have never seen me with so much. क्या? What the hell are you using? What is this? What am I? I'm looking like a bunny rabbit. I was correct. First it was the brown patch here. Now it is the pink patch here. Anya, इतना मुझे नहीं चाहिए. Mama, just quiet ना. Why aren't you? I'm not editing all this. Everyone should see how much I cry. पापा. झगड़ा होता है माँ बेटी का ना करने के वक्त. मैं बोलूँगी कम करो, वो बोलेगी नहीं मम्मी ठीक है. अभी तो बेकिंग करेंगे तो देख कुछ तो कम ले हो इस साइड का जाएगा. तो देख. हो गया है. अब क्या बेकिंग नहीं करोगे आप? बेकिंग? अब मेरे फेस को बेकिंग ओवन में डालेगी. क्या क्या टर्मिनोलॉजी है इनका.
ना ज़्यादा लगा रही हूँ ना. Okay. Perfect. Okay, she has finished the base for me. All the layers that she had to apply, जैसे आपने देखा, and she's even finished my contouring and my blush. So I am going to do the rest because I don't want to do too much on my eyes or anywhere else anymore. No eyeshadows, nothing. So I am going to use my liner myself and no mascara today, and I'm going to do my lips myself. You have to take out your chashma for Yeah, I know. I'm not silly, of course I know. I'll have to do this somewhere else. Okay, I finished my eyes. I've just used a line of kajal below, and that too मैं अंदर की तरफ काजल नहीं लगाती हूँ, मैं आउटर लाइन में नीचे काजल लगाती हूँ. एंड आई हैव यूज्ड अ लाइन ऑफ अ ब्लू पेंसिल, आई पेंसिल. That's all for my eyes, no mascara. It's already looking too heavy, and I'm going to go finish my lipper base and show it to you. I'm going to first, I've already used a lip balm. I'm going to use some loose powder as a base on my lip. Just tap your finger to the loose powder, and lip balm और loose base में at least 10 minutes का gap होना चाहिए so that the balm has been absorbed by the lip. And this we are using to give a coating, dry coating to our lips so that when we apply our lipper, it sticks and stays longer. I'm done. So first I'm applying a shade of Matte Me. अब मेरे बिना चश्मे के मेरे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं पहले लगा के फिर आपसे डिस्कस करती हूँ. Okay, so for the lipper I used my base with the loose powder on my lip to hold the lipper together, and then I used Matte Me blush pink, and over which I used a MAC of shade 20. So this is my final lipper look. It's turning out to be a very, I don't know, a light rose pink, but it's not so light and stark. It is a nice blend of both the shades. So once I'm ready, I'll show you the final look. मैंने अपने सारे जितना आपको ये वीडियोस रोल किए ना अभी, तो मैं रियलाइज़ किया कि जितने मैंने आपको अभी दिखाए हैं ना, ये काफ़ी ओल्ड वीडियोस हैं. अराउंड 1 महीना पहले जब सावन का महीना चल रहा था, ये तब के वीडियो है जब मेरी फ्रेंड ने इनवाइट किया था टू सेलिब्रेट हर न्यूली वेड बहू का नया फर्स्ट सावन था. तो उसकी सेलिब्रेशन के वीडियोस मेरे पास अभी भी पेंडिंग थे, जो मैंने रियलाइज़ किया मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं किए. तो मैंने सोचा चलो आज अभी भी बारिशें चल ही रही हैं, सावन तो हमारे लिए चल ही रहा है, जबकि वी आर ऑलमोस्ट डन विद द सावन. तो फिर भी मैंने सोचा ये आपके लिए मैं रोल कर देती हूँ ताकि यू कैन एन्जॉय अ फ्यू फन मोमेंट्स दैट I had with not just my daughter doing my makeup but also with my friends, and so much fun we had with the Dholak night and fun games we played in that night. So I hope you enjoyed this video and stay tuned for some more fun in the later ones to come. See you. Good night.